So good evening, everybody. Dhananjay, we will start with your Good question evening, sir. because Sham is not available right now. और उसका एक क्वेश्चन है वो मैं अंत में उसका जवाब दे दूंगा. Okay. Okay. So one by one पूछो. हाँ. Yeah. Yes. So I had asked a question. There are two questions, and for first question I had added one detailed explanation. My intention. I will read both the first question and Yes. the intention. First question is, if dietary fat does not raise insulin, then how it gets metabolized? And the further explanation of my question is, the intention behind asking question one is, if we eat a meal of less carbs, right amount of protein and more fat, I wanted to know, would bodies still use glucagon to break the stored fat for energy? And if yes, then what happens to the dietary fat which was part of our meal? Okay. So first, okay, now you got your question. So what is your first question? Again, you repeat and I will start from that. Yeah. First question is, if dietary fat does not raise insulin, then how it gets how metabolized? it will get metabolized? Dietary fat basically is broken down and then absorbed and again reassembled. Okay. So basically, for the purpose of digestion, insulin is not required. Yes. Insulin is basically required for protein and carbohydrate or glucose for uptake of these two elements in the cell. And for digestion of fat, we need lipase and not insulin. Right. So insulin is irrelevant so far digestion of or breaking down of fat is concerned. Right. So in the video, you had mentioned that fat does not cause increase in weight because it does not raise insulin. Exactly. See, why glucose or protein raise insulin? Because for uptake of glucose and protein, insulin is required. That is why they both these things increase insulin. But so far fat is concerned, for breaking down and uptake, insulin is not required, so it doesn't increase insulin. But my intention of asking is that then it may, without insulin, it may use some other pathway, and then still it may get deposited in adipose tissue. So how it does not increase weight? See, if you eat excess of fat, it will increase weight. Okay. Though it may not increase insulin, it will be deposited in adipose tissues. Yeah. So when I say eating fat does not increase weight, that means if you are eating within a total caloric limit, okay, then it doesn't increase because it is used as energy. Right. Got the answer. You get my point? Huh? Yes, yes. Yeah. If you eat excess glucose, excess compared to your requirement, it is called basal metabolic rate, BMR. And depending upon your activity, you may add point something into that. So if BMR is 1600, you may require 2000 calories per day. Right. If you eat excess calories, excess than 2000, definitely will increase the weight. But yeah. Correct. Got the answer. Within 2000, if you eat fat more, it doesn't increase weight. Right. So even if we eat less carb, still total calorie intake still matters when it comes to. Yes, of course. Yeah. हाँ सर विचारू सर याच्यावर एक प्रश्न विचारू हाँ विचार ओके ओके नाही फॅट तुम्ही म्हणता दिवसाला किती खाल्लं पाहिजे म्हणजे किती चमचे तूप आणि किती चमचे तेल असं गेलं पाहिजे समजा हा असं काय आहे का If you read my second book आरोग्याचा लोचा, I have given मी वाचायला घेतलंय सर 4 formats
format number 1, format number 2, format number 3, and format number 4. So the composition of fat and carbohydrate varies. Highest is 75% fat or say 65% fat Okay. of total calorie intake. Okay. So Okay. it depends on the person to whom I am recommending this formula. If a person is diabetic, if he has heart issues, if he has obesity, from what you call standard viewpoint, what I will suggest is disastrous. If a person is Acha. obese, I will ask him to eat fat more compared to carb. Yes. And he will go in That I got depression. it, sir. And he will go in depression in that case. So if your insulin is more than 20, I will tell you that eat 80% fat and 20% protein. And Okay. your insulin will drop down from 20 to 5 within 1 month. Okay. It is absolutely beyond comprehension of standard dietitian or even a medical person. Okay, sir. But it is like that. What I'm telling you is the fact. So Okay, sir. there are 4 formulas, 4 combinations. So which combination is recommended depends on the person. So if you read that book, you will find the 4 combinations. मी आता जस्ट स्टार्ट So there is no standard recommended. There is no standard recommended formula. There is nothing standard in the field of nutrition and health. Nothing standard. It has to be decided on the case-to-case basis. Yeah. Okay, sir. Dhananjay, what is your next question? Yeah. So in the video, in the first part, I think you have mentioned that excess glucose gets converted to fat, and then afterwards, in the second part of the video, you also mention that when you ask the questions to the audience, what do you think? What is cholesterol made from? Then you said that from carbs only, glucose only, cholesterol is made. So. So when is excess glucose converted to fat and when to cholesterol? So the point is, what is the purpose of cholesterol and what is the purpose of fat? Fat is a future source of energy. Future, not present. And cholesterol has some definite roles and critical roles as on this moment. So body decides right now what is required. Okay. And on the basis of body's decision, at this moment, if body feels that more cholesterol is required, it will convert it into cholesterol. But body feels that right now it is not required and it is to be used later, it will convert it into fat. Right. So it is not Madhav Joshi who will decide whether this glucose molecule will go to fat or will go to cholesterol. It is body's decision. It is body's wisdom. Right. Fat has, as such, very little role so far cholesterol is concerned. It is a store of energy. Right. For future use. No doubt, it holds vitamin, it holds, it has lot many functions, but so far cholesterol is concerned, it is a vital element. Fat is not a vital element. Correct. If body feels right now cholesterol is required, body will create cholesterol. Okay, thanks. And it changes from moment to moment. Okay. If body creates today cholesterol, that does not mean tomorrow also it will convert glucose into cholesterol. Right, right. Body may think now it is enough, cholesterol is enough. Point number 1. And point number 2, a human being has different
setup of enzymes and receptors and genes. Okay. So that also matters. Right. If I had one person whose normal cholesterol was 750, Okay. and that person herself was a doctor. Okay. So she came to me and she told me, sir, my normal cholesterol is 750. What do I do? Okay. If I stopped her carbohydrate to the extent of zero also, no, Mhm. her whole setup in the body, which she got by birth, has that mechanism to create more cholesterol. We can't do anything for that. Okay. So a So related question. whatever setup you have, Yeah. whatever we feed in, if that works, it will work. But I can't change the setup of that body. Okay. There one are re- people. One related question is Yeah. I read that triglyceride, that is fat, cannot travel through the blood unless it is bound with some lipoproteins. Otherwise, it cannot travel through the blood. Then how come in the blood test we get triglyceride levels? Where you read this, that triglyceride cannot travel without lipoprotein? I think some YouTube videos that I referred. See, the HDL, LDL, VLDL, if you look at the composition of these molecules, Okay. it carries in different ratios. Okay. If protein is more, see, protein density is more, fat density is less. You log on to the Google and find out what is the composition of HDL molecule, how much percentage is protein, how much percentage is fat, and you will find that every molecule has a different. VLDL means very low density, Right. low density and high density. So that depends on the composition. Okay. So that molecule contains that fat. Yeah. So that is what is measured in blood test. That is what is measured in the test. Okay. Got the answer. Now, only thing I think somebody has posted the question, when it is absorbed in the body. Now I am telling you something which is some good fat or bad fat question was there. I read it. Somebody asked what is good fat and what is bad fat. Before we jump into what is good fat and bad fat, first we should understand how fat travels in the body. The question is connected to your question. When you eat fat, it is separated, the glycerol molecule is separated, fatty acids are separated, they are absorbed, they are reassembled. After having reassembled, fat is not initially taken to liver. This is very, very, very important dimension of digestion and absorption of fat. Except fat, all molecules are taken to liver through portal vein. Okay. What is the role of the liver? First, to detoxify. If something unwarranted is there in the food, liver will detoxify. But if something unwarranted is there in the fat, fat doesn't reach liver in first place. It reaches lymphatic drainage system. So Fat will bypass doesn't liver. go to liver. Fat bypasses the liver, goes into lymphatic drainage system. That lymph travels, that goes directly to heart. Then that fat travels through blood and then it comes to liver. In meantime, now if you visualize this whole picture, and if the fat, now I will come to the bad fat and good fat. Hydrogenated vegetable oil, HVO, is absolutely disastrous fat.
margarine, absolutely disastrous fat. Why? Because it contains chemicals. It is a processed fat. It contains hazardous chemicals. There was an option for liver to destroy these chemicals, but when it bypasses liver, that goes directly into heart, then it travels through the blood. So that caustic material which is there in the margarine, which is there in the HVO, creates havoc in your body, and then it reaches liver, then liver takes care of it. But before it reaches liver, it has created n number of damages in your body, including, you will not believe, basal ganglia is a part of the brain. If that basal ganglia brain neurons which are covered with myelin sheath, if this disastrous fat molecule in any way reaches there and that myelin sheath is damaged, it creates mislinks or misconnection in that basal ganglia, finally resulting into some neurological disorders like Alzheimer or Parkinson's. Can you imagine a biscuit, a glucose biscuit, or a Marie biscuit, or even I would say threptin? Lot of people, when we talk about threptin, बहुत गदगद हो जाते हैं. ये doctors recommended biscuit है. But that also contains hydrogen and vegetable oil. That also contains chemicals. All these chemicals are disastrous. If they are in the fat, that fat molecule travels whole body and creates problem. So what is good fat? The fat which does not contain chemicals is a good fat. And what is bad fat? The fat which contains chemicals is a bad fat. What is good protein? The protein that doesn't contain chemicals, man-made chemicals, I mean. What is good carbohydrate? The thing which doesn't contain man-made chemicals. So very simple classification. The food that doesn't contain man-made chemicals, preservatives, stabilizers, coloring agents, flavoring agents, all these are carcinogenic elements. That is good fat, or that is good protein, or that is good carbohydrate. Okay. Dhananjay, you have any question? So it's this, you talked about good and bad fat. So usually it is said that omega-3 to omega-6 ratio has to be in a specific range. So Yes, my question yes. is, can we completely do away with vegetable oils if possible, and or omega-6 oils are still necessary for body, setting aside culture and tradition? Before we jump into this question, I would like to ask whatever we have deliberated. Anybody else has any question? You hold this question, very, very important question. But before we go into that, because it is a diversion. So before we go to that, anybody has any question about what we have discussed? कोणाला काही विचारायचं? हाँ yes sir. कोण आहे? एक मिनिट. हा वृषाली. हा जसं तुम्ही तुमच्या व्हिडिओ मध्ये म्हटलं आहे की आपण मोर फॅट्स खाल्ले पाहिजे, बॅलन्स प्रोटीन आणि लेस कार्ब्स खाल्ले पाहिजे. पण आपण मोर मोर फॅट्सच्या झमेल्यामध्ये आपण रॉंग फॅट्स खातो बेसिकली. मला तर इथे एक्झाम्पल देऊन तुम्ही क्लिअर करा की एक्झॅक्टली रॉंग फॅट म्हणजे आपण जे फॅट्स खातो ते कुठले असू शकतात. मी आता सांगितलं ना, हायड्रोजनेटेड व्हेजिटेबल ऑइल, margarine, refined oil are bad fats. Okay. Desi ghee is a good fat. Butter is a good fat. Is a good fat. बटर म्हणजे अमूल बटर का आपलं नॉर्मल? नाही. बटर म्हणजे घरचं लोणी, आपण घरी मंथन करून केलेलं लोणी. ओके ओके. आणि अमूल बटर इज अ डिझास्टरस फूड. अमूल बटर इज अ डिझास्टर. यू गॉट माय पॉइंट? हा येस येस.
पण तुम्ही म्हटलं कार्ब्स आपण कमी खाल्ले पाहिजे. आता कार्ब्स म्हटलं की आपल्या जेवणामध्ये चपाती, भात हे सगळ्या गोष्टी असतातच. मग अशा ठिकाणी तुम्ही म्हटलं की ते कमी खाल्ले पाहिजे, तर म्हणजे एक्झॅक्टली काय केलं पाहिजे? म्हणजे कमी खाल्ले पाहिजे. फॉर तर एक्झाम्पल, चपाती आता कमी खाल्ले पाहिजे म्हणजे काय केलं पाहिजे, तर कमी खाल्लं पाहिजे. फॉर इफ यू आर इटिंग 2 chapatis and 1 katori bhaji, do it other way. Eat 2 katori bhaji and 1 roti. ओके. And that too also, see, if your fasting insulin is 5 or 6, you need not follow this formula. You can have 2 chapatis and 1 katori bhaji. But if your fasting insulin is 10 and above, you need to follow this formula. See, ये फॉर्मूला जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये कोई मेरे मन की संतुष्टि के लिए नहीं बताता हूँ, उस व्यक्ति की नीड है इसलिए बताता हूँ मैं. अगर किसी के, एक आप लिख लो, इफ यू हैव पेंसिल एंड पेन, अब जस्ट लिख लो, अगर शरीर में अगर महिला है तो 25% से कम फैट है, और पुरुष है और 20% से कम फैट है, दोनों में अगर फास्टिंग इंसुलिन 5 से कम है, और ट्राइग्लिसराइड अगर 100 के नीचे है, वो व्यक्ति जितनी रोटी उसको खाना है वो खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. माधव जोशी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आई वुड सजेस्ट एवरी ईयर ही शुड चेक दिस 3 पैरामीटर्स. महिला है तो बॉडी फैट 25 के ऊपर न जाए, पुरुष है तो 20 के ऊपर न जाए, इंसुलिन 5 के ऊपर न जाए, और ट्राइग्लिसराइड 100 के ऊपर न जाए. देन ही क्वालिफाइज टू ईट कार्बोहाइड्रेट्स. एक बात ध्यान में रखो, आपको लगता होगा कि मेरे दादा इतनी रोटी खाते थे, कोंकण में या साउथ में कितना चावल खाते हैं, फिर उनको कुछ नहीं. तो देखो, लाइफस्टाइल मैटर्स, नॉट ओनली फूड. एक जमाना था, अगर किसी महिला को कार्बोहाइड्रेट खाना है तो अगर कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन डिस्कार्ड करो, नदी पर जाकर कपड़े धोना शुरू करो. आई डोंट माइंड दैट लेडी ईटिंग एज मच एज चावल एज शी वांट्स. आपके घर में घर घंटी होती है, आप चक्की चलासन सीखते हो ना अपना योगा का, तो चक्की चलासन करो और फिर कार्बोहाइड्रेट खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके ओके. अरे अगर एक जमाना था जब टीवी का रिमोट नहीं मिलता है और उठ के चैनल चेंज करना पड़ता है, इतना वो व्यक्ति इरिटेट होता है. वी आर सो यूज्ड टू दिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल. उठाएला नको. आपके घर में अगर 18-20 साल का बच्चा है ना, उसको बोलो नाके पर जाकर दूध का थैली लेके आओ, उसको स्कूटर लगेगा जाने के लिए, Yes. वो चल के नहीं जाएगा. यू वोंट बिलीव, आई टेल यू वंडरफुल इंसिडेंस. मैं आईडीबीआई में काम करता था और हमारी जो बिल्डिंग थी उसमें ऑलमोस्ट 22 फ्लोर्स थे. ओके, चौथे माले से 5वें माले को जाने के लिए लोग 20-20 मिनट लिफ्ट के क्यू में खड़े रहेंगे. ऑन व्हाट बेसिस यू आस्क परमिशन टू ईट कार्बोहाइड्रेट? एक मंजिल तुम चढ़ नहीं सकते, चढ़ना नहीं चाहते, कार्बोहाइड्रेट खाना है, फिर 4 बजे जाके भेलपुरी खाना है. ये तो नाइंसाफी हो गई, ये तो नाइंसाफी हो गई. सो नथिंग रॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट. हमारी लाइफस्टाइल उसको कंपैटिबल नहीं, ये प्रॉब्लम. सो मेक योर लाइफस्टाइल कंपैटिबल एंड ईट एज मच एज कार्ब यू वांट. ओके, एनीबडी एल्स? ह्याच्याशीच रिलेटेड विचारायचं आहे ना, राईट ना? हा हो, आत्ता ते डिस्कशन चाललंय त्याच्याविषयी. अदरवाइज आय विल गो टू धनंजय's क्वेश्चन विच इज अ बिट डिफरंट डायमेन्शन. मला 2 अजून होते म्हणून विचारत. हा बोल 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 बोल. पण ते रिलेटेड टू दिस तर नाही मला आहे. पण आहे.
मिल्क आहे नाही, जे आपण हा, दूध आता रिलेटेड टू दिस विचार, आता रिलेटेड टू दिस विचार. हा, कल्पना बोल. येस. ह्या व्हिडिओच्या शेवटी सर तुम्ही म्हटलं आहे की एंडोथेलियम जे आहे आपल्या आर्टरीजचं ते खराब होतं. ऍसिडोसिस, फॉर्मल्डिहाइड, कॉस्टिक सोडा आणि कार्बन रिलीज फ्रॉम ऑइल. बरोबर. तर free मग radicals. फॉर्मल्डिहाइड, हा, पण फॉर्मल्डिहाइड कुठून येतं ते नाही मला कळलं. ऍसिडोसिस, कॉस्टिक सोडा बिस्किट मधला कळला मला, कार्बनचं नाही ऑइल कळलं, पण फॉर्मॅलिटी, फॉर्मल्डिहाइड formaldehyde, phosphoric acid, these are different chemicals used in different foods. That is how it अच्छा. enters your body. पण मग विच फूड म्हणजे असं कुठलं? फॉर एक्झाम्पल एक जमाना था, मैं हमेशा कह एक जमाना था जब शक्कर बनाने में फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड इन अदर ओके वर्ड, ओके, इट या इज वन समथिंग यूज करते थे. नाउ दे ओके, यूज कळलं फॉस्फरिक सर. एसिड. इट इज इक्वली बॅड. ओके ओके, थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. धनंजय, नाउ आई कम टू युअर क्वेश्चन. धनंजय, ओके. तुझा एक प्रश्न मी नंतर घेतो म्हटलं ना, आता घेऊया तो. So shall I ask again? हा, बोल. हा, yes. So is लीनाताई तुमचा म्यूट एक करा ना, मिनिट लीनाताई. आवाज म्यूट करा सगळ्यांनी, कारण आवाज डिस्टर्बन्स येतोय. हा, म्यूट आवाज. फक्त प्रश्न विचारणारा त्याचा ओपन ठेवेल, बाकी म्यूट करतील. हा, धनंजय विचार प्रश्न. Dhananjay, go ahead. So my question is, it is said that there has to be omega 3 to omega 6 certain ratio. Omega 6 should not exceed certain ratio. So either you consume more omega 3 or you reduce omega 6 or both. So my question is, if we totally cut off omega 6 oils, that is vegetable oils, and only focus on ghee or coconut oil, is it okay? Or omega 6 is essential to body? No, if you read my first book, I have given 40 essentials. Right. 14 vitamins, 15 minerals, 10 amino acids, and 1 essential fatty acid. These 40 elements or 40 ingredients, 40 ghatak, our body cannot synthesize. We have to eat it. Okay. We have to eat it. But other than this, whatever we eat, our body can create all that, whatever you want. Right. You need rather. Thanks. So oil is not an essential element. Even you will shocked or surprised to know, ये लिस्ट में कार्बोहाइड्रेट का नाम नहीं है. You get my point? Yes. Carbohydrate is not an essential element of your food. 14 vitamins, 15 minerals, 10 amino acids, and 1 essential fatty acid. But these 40 ghatak are only the essential food. और बाकी का नॉन इसेंशियल फूड है. नॉन इसेंशियल का मतलब क्या है? हमारी बॉडी whatever we eat can manipulate everything and create whatever it is needed. For example, if you eat fat, your body can create glucose out of that fat. Okay. You get my point? If you eat zero carb, I have been eating zero carb for ages. So where do I get whatever my brain needs, 5% or 10% of carb or glucose rather? If a triglyceride is broken, it gives rise to fatty acids and part of it is converted into glucose. Okay. So whatever my glucose need is there, body can create that glucose from the fat. अरे मैं कहता हूं माधव जोशी को छोड़ दो, forget it, कुछ भी नहीं है. You trust your body's wisdom and ability. लेकिन हमने जो बुक में पढ़ा है ना, उस पर हमारा इतना विश्वास है कि बॉडी में जो होता है उस पर हम ध्यान ही नहीं देते. Right. मुझे एक बात बोलो, कोई जो गाय बैल बकरी क्या खाते हैं? घास खाते हैं. हेलो, घास खाते हैं ना, घास खाते हैं नॉर्मली.
जो जंगल में घास खाते हैं वो पत्ता खाते हैं, राइट? राइट। वो हाथी के शरीर में या भैंस के शरीर में या घोड़े के शरीर में हड्डी कहां से आती है? फ्लैश मांस कहां से आता है? हाथी के शरीर में कितनी चर्बी होती है? हाथी के शरीर में क्या हाथी चर्बी खाता है क्या? हैव यू सीन एनी हाथी ड्रिंकिंग और ईटिंग फैट एनी टाइम इन योर लाइफ टाइम? नेवर। फिर हाथी के शरीर में इतनी चर्बी आती है, उसका रॉ मटेरियल क्या होता है? वो घास होता है। राइट। आई टेल यू मेनी टाइम्स जिनको घुटने की बीमारी होती है ना, एक्चुअली ये तो मैं 1 साल का कोर्स लेना चाहता हूँ। द वे वी आर गोइंग, आई फील दैट वी शुड कंटिन्यू फॉर 1 ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट टू नो बॉडी में क्या क्या होता है। बहुत सारे लोग ना बोलते हैं कि घुटने में अगर दर्द होता है, साइनोवियल फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है घुटने के जॉइंट में, वो कम होता है। तो तुम अगर तेल पियोगे ना, वो कैस्टर ऑयल बोलते हैं, कैस्टर ऑयल, एरेंडल तेल, वो पियोगे तो उसकी मात्रा बढ़ेगी। किसकी? साइनोवियल फ्लूइड की। तो उनका विजुअल ऐसा है कि वो मुंह से ऑयल जाएगा, फिर ऑयल जाएगा, वो पेट में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, धीरे धीरे सरकते सरकते वो अपने घुटने तक जाएगा। ऐसा होता नहीं है शरीर में। योर बॉडी डजंट वर्क लाइक दिस। तो तुम्हारी बॉडी, हाँ, ये जो 40 घटक है ना, उसके लिए बॉडी लाचार है। उसको हम इसेंशियल बोलते हैं। वो बॉडी नहीं तैयार कर सकती है। ओके। ये जो इसेंशियल फैटी एसिड है ना, एक हाँ। लिनोलेनिक एसिड, वो बॉडी तैयार नहीं, वो तुमको खाना ही पड़ेगा, वो तुमको खाना ही पड़ेगा। सो अदर थिंग्स तुम नहीं खाओ तो भी चलेगा। बकरी, जो गोट खाते हैं ना, बकरी काटते हैं, तो बकरी के शरीर में चर्बी कहां से आती है? वो घास से आती है। तो तुम घास खाओगे, उसका भी चर्बी में कन्वर्जन होगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Then with that rule or with that kind of a principle, when we say na ki we should eat X number of amount of protein per kg of weight, then if we don't eat, then from carb also body should be able to create protein, no? Because no, I told you, you have not listened to me carefully. 10 amino acids are essential. Essential. Okay. We need 21 amino acids. Out of 21 amino acids, 10 amino acids are such that the body cannot create. Right. So that is required. That you have to eat. Yeah. After eating 10 amino acids, balance other amino acids body can create. Okay. So those you have to eat. You can't bypass it. Correct. Dada, 4 minutes are remaining. Now, anybody has any question? 4 minutes. Only one question I can take. Rest, any question, I will take it later. Anybody has any question? Hello. Vrushali, I think I can take one question because I have 4 minutes. Yes, one question. मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मिल्क जो हम पीते हैं नॉर्मली, तो वो कितना पीना चाहिए दिन में, एंड उसके लिए कोई टाइम है क्या? मतलब रात को नहीं पीना है, इवनिंग नहीं पीना है, कुछ है क्या उसका कोई नियम नहीं है। जब मन है उतना पियो, पेट भर के पियो। दूधो क्या, हिंदी में कहावत है ना, दूधो नहाओ पूतो फलो। दूध से नहाओ यार, क्या प्रॉब्लम है? या ऐसे फालतू चीजें सोचने का नहीं। जितना मन है पियो ना। नाइट को कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। खुद को कर इतना बुलंद के हर तहरीर के पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तुम इतना बुलंद करो खुद को कि रात को 12 बजे उठ के भी कभी दूध पीने की नौबत आ जाएगी तो पियो, बचाओ। मराठीमध्ये म्हणतो ना की लवंग खाल्ली की उष्ण पडतं आणि वेलदोडा खाल्ला की थंडी वाजते, अशी आपली अवस्था आहे। अरे साला दगड पण पचले पाहिजेत आपल्याला खाऊन। इतकी आपली सगळी सिस्टीम पॉवरफुल पाहिजे की बघ 12 वाजता हे खायचं। इतकं तुम्ही ते पुस्तकाप्रमाणे नका हो जाऊ प्लीज।
आवाज तुमचा म्यूट झाला. डोंट गो बाय बुक, उसको गॉस्पेल मत समझो. हाँ, गाइडलाइंस है. आपलं एकच शरीर विचार- जो है ना, हा बोला. तुम्ही बोलताना कालच्या किंवा परवाच्या ह्याच्यामध्ये की भूक लागली तर आपण इंडिकेशन घ्यायचं शरीराचं की आपण भूक लागली तर जेवायचं, बरोबर आहे. पण हो, ऍज द हो. एज ऍडव्हान्सेस जसं तुमचं मन शांत होतं तेव्हा तशी भूक लागायची फार कमी होते, तसं पण असतं ना. पण आपल्याला हो. भूक नाही लागत आहे तरी पण मग आपण जेवावं की आपल्या शरीराची गरज आहे म्हणून का काय? मग दोन गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. चांगला क्वेश्चन आहे. आपण एकच मिनिट आहे, आता नाही उत्तर दिलं तर आपण पुढे घेऊया. डू यू सफर फ्रॉम एनी इश्यू? बेसिकली इफ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी इश्यू, actually you need very little food. You don't need food, so don't eat. But because of less food, if your body is showing some symptoms like fatigue, if you feel tired, then perhaps you need some B vitamin or some iron deficiency. But symptom wise there is no deficiency, and if you don't feel hungry, don't eat. Your body, a most wonderful question madam has asked, your body has ability to recycle the available resources. You trust your body's wisdom. Body can recycle to the extent that you can't imagine. सर माझ्याकडे दुसरा प्रश्न त्याच्यामध्ये आहे, पोट प्रश्न, की मला भूक बोला. नाही, कोणाला भूक न लागणं परंतु खावंसं वाटणं, ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत ना. जरा तुम्ही काय पुन्हा बोलला सांगा होता काय तुमचा प्रश्न आहे. पहिल्या दिवशी कसं बोलला होता तुम्ही, भूक लागेल तेव्हा वी हॅव टू गिव्ह रिस्पेक्ट अँड वी शुड बी इटिंग, बरोबर आहे. हो, दोन वेगळे इश्यूज आहेत. हो. कोणाचे म्हणजे माझ्याच बाबत नाही बोलत आहे मी, एक जनरल उदाहरण देते. नाही, कोणता इश्यू आहे, कोणता इश्यू आहे सांगा तो. कित्येक महिलांना भूक लागत नाही, बरोबर आहे, परंतु एखादी वस्तू खावीशी वाटते. खावीशी वाटणं वेगळं आणि पोटात भूक लागणं वेगळं. मीटिंग क्लोज होईल. ओके, सिंपल इज दॅट भूक लागलेली नाहीये आणि खावीशी वाटलं तर खावं आणि